पल का इंतजार है और कुछ ही पल में आप देख सकते हैं Sukhoi-30 MKI विमान से वो उड़ान भरेंगे। सुधीर यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या ताज़ा जानकारी? So as you see in those visuals, the president is seen wearing the IAF gear. We'll try and go across to Abhishek again. But these are the live visuals coming in right now from Tezpur in Assam. President Droupadi Murmu, who's all set to fly the sortie, she's seen wearing the IAF gear as well. Remember in 2009, Pratibha Patil, the president, had also flown the Sukhoi, and this time it's President Droupadi Murmu who's all set to take off from the Tezpur IAF station. सारी सेनाओं की स्थिति है, उनकी बारे में उनको जानकारी दी गई है। और जो इस एरिया है, खासतौर पर गौरववादी इस इलाके की हम बात करें, जो असम में जो तेजपुर का जो हवाई अड्डा है, जो सेना के एयरबेस है, वहां से वो सॉर्टी भर रही है। तो ये इसका कई मायने भी इसके खास है कि जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड, अगर हम वैश्विक तरीके में देखें कि जिस तरीके से हम दूसरे देशों को भी संदेश देना चाहते हैं, तो उसके भी कई मायने हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से वो Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट में सॉर्टी भरेंगी, भारतीय वायुसेना का जो मेन फाइटर जेट है वो ये माना जाता है लॉन्ग एंड्योरेंस है, इसकी बहुत काबिलियत है, रशियन ओरिजिन का है जाहिर तौर पर, और करीब 3 दशक से ज्यादा जो है वो हो चुके हैं इसको भारतीय वायुसेना की सर्विस में, इसको भारतीय वायुसेना की सेवा करते हुए। तो ये अपने आप में बहुत खास चीज है। और देखिए, जो गौरव वो उड़ान भरेंगी वो एक ट्रेनर होगा, जो ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, जिसमें वो एक को पायलट के साथ बैठेंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन, हम कहेंगे एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, जब आपसे थोड़ी देर बाद जो तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर है वो जो Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट है उसमें उड़ान भरेंगी। इससे पहले की अगर हम गौरव बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है, प्रतिभा पाटिल है, और इससे पहले अभी के जो इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने भी जो फाइटर जेट है उनमें सॉर्टी भरी थी। और ये जो इसके बाद से अब जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो सुखोई में उड़ान भर रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर कई मायनों में ये खास है, कई मायनों में बेहतरीन चीज है। और जिस तरीके से तीनों सेनाओं के मोरल बूस्ट की बात की जाए वो कई मायने में खास है। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार जो है लगातार जो हमारी तीनों सेनाओं की जो जरूरतें हैं, हमारी तीनों सेनाओं का मोरल बूस्ट है, उन सब चीजों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। सेना को बेहतरीन तरीके से जो सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, वो तो मुहैया कराने की बात लगातार सरकार की तरफ से गौरव हो ही रही है। लेकिन खास तौर पर ऐसे जो मायने होते, ऐसे जो क्षण होते हैं, अगर हम हिस्टोरिक मोमेंट्स की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक जो सेना का जवान है उससे लेकर जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, सभी उनके मन में एक उत्साह का संचार होता है, एक गौरव का संचार होता है कि देखिए हमारी जो सबसे तीनों सेना की जो सुप्रीम कमांडर हैं वो हमारे सामने है, वो फाइटर जेट पे सॉर्टी भर रहे हैं। किस तरीके से भारतीय सेना पर वो विश्वास करती है, किस तरीके से लगातार सेना के मोरल बूस्ट के लिए काम करती है। तो ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन रहती है और यही एक ऐतिहासिक मोमेंट गौरव हमारे सामने अब से थोड़ी देर में आने वाला है। बिल्कुल सुधीर, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब इसमें बैठ चुकी हैं और अब से बस कुछ ही क्षण में वो उड़ान भी भरेंगी। तो ऐसे में आज उड़ान की बारीकियों को तो वो जान पाएंगी ही, साथ ही साथ जो चैलेंजेस सामने आते हैं जब इस तरह के फाइटर जेट्स उड़ाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस से भी वो रूबरू होंगी। बिल्कुल, देखिए वो चैलेंजर से तो बिल्कुल गौरव रूबरू होंगी, लेकिन इससे पहले भी लगातार, क्योंकि जब भी आप किसी फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं तो जो एरोडायनेमिक्स के जो नियम है, जो हम कहेंगे कि एरोडायनेमिक्स के जो नियम है उनसे किस तरीके से उन पर असर पड़ता है, ये सारी चीजें जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो उनको सारी कुछ बताई गई होंगी। लेकिन खास तौर पर जिस तरीके की गौरव बात की गई, जो तेजपुर एयरफोर्स बेस है, वो अगर हम पूर्वोत्तर के इलाके की खास तौर पर बात करें तो वो बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। और यहाँ से अगर हम बात करें एयर डोमिनेंस की, एयर सर्वेलेंस की और हमारी एयर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें गौरव, तो इससे जो हमारे देश चीन की बात करें, म्यांमार और बांग्लादेश और भूटान, 4 देशों की तरफ जो हमारी एयर डोमिनेंस, एयर सिक्योरिटी और एयर सर्वेलेंस की जो बात होती है वहां के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसे स्ट्रैटेजिक बेस से भी उड़ान भरना ये भी कई मायने में खास है, क्योंकि इससे पहले के जो हमारे तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर्स रहे थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, और इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जो उड़ान भरी थी वो पुणे के हवाई अड्डे से, पुणे के जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से उड़ान भरी थी। और ऐसे में
जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से जो तेजपुर का एयरफोर्स बेस है वहां से उड़ान भर रही है, ये भी कई मायने में खास है। और जिस तरीके की आपने बात कही कि उनको कई सारे जो चैलेंजेस हैं, कई सारी चीजें हैं, उसके बारे में बताया गया होगा और उसके इनके जो को पायलट होंगे लगातार उनको ब्रीफ करते रहेंगे, ब्रीफ बताते भी रहेंगे कि आखिर किस तरीके से जो विमान है वो उड़ान भर रहा है, किस ऊंचाई पर जा रहा है, किस तरीके से इसमें जिसकी जो खूबियां हैं वो किस तरीके से इनको और आगे ले जाकर जाएगा। तो हालांकि यहाँ गौरव एक जरूरी चीज ये भी होगी कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो फ्लाइट है वो नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे जो हम कहेंगे कि जो कोर्स है वो जो लगता है वो काफी ज्यादा होता। तो हालांकि एक सामान्य फ्लाइट रहेगी और इसमें कोशिश ये की जाएगी कि राष्ट्रपति को जो जरूरी जानकारियां हैं, जो एक बेहतर अनुभव है वो बताया जाए। और इसके अलावा जो हमारा एयर डोमिनेंस, एयर सर्वेलेंस का जो इलाका है, किस तरीके से हम इनको देखते हैं, ऊपर जाकर किस तरीके की स्थितियां बनती हैं एक फाइटर जेट के लिए और सुरक्षा के लिहाज से, उन सारी चीजों से रूबरू कराया जाएगा। तो ये कई मायने में खास रहेंगी इस लिहाज से। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक अलग अनुभूति भी होगी, एक अलग अनुभव भी मिलता हुआ नजर आएगा। बारीकियां तो वो जानेंगी, साथ ही जो समस्याएं और जो कठिनाइयां जो सैनिक हैं, जो फाइटर जेट के जो उसे उड़ाते हैं, उस पायलट हैं, उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं उनसे भी आज वो रूबरू हो पाएंगी कि किस तरह की दिक्कतें उनको आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण पहल है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, देखिए गौरव, महत्वपूर्ण पहल तो इस मायने में खास है ही कि जिस तरह तीनों सेनाओं की वो अगर इस तरह की कदम में आती हैं, इस तरह की चीजें वो भारतीय जो तीनों सेना है पूरे देश के सामने अगर ये चीजें आती तो ये बहुत खासा मायने रखता है। जिस तरीके से हमने कहा ना कि जिस तरीके से लगातार जो सरकार की कोशिश रही है, आप लगातार देखिए पिछले 7-8 साल से जिस तरीके से भारतीय जो तीनों सेनाएं हैं उनको सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उनकी जरूरतों के लिहाज से जनमानस में एक जो चेतना जगाई गई है कि जो हमारी सेनाएं हैं उनके प्रति हमें सम्मान होना चाहिए और लगातार उनकी जरूरतों के लिहाज से भी जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, न केवल जरूरतों के लिहाज से बल्कि अगर लंबे समय में भी देखें तो मेक इन इंडिया की पहल को अगर आप देखें कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बने, ये सारी पहल जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। और ऐसे में जब तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर अगर हमारे जो मेन फाइटर जेट है Sukhoi-30 MKI उसमें अगर उड़ान भरते हैं तो ये एक बहुत सुखद अनुभव रहता है, एक बेहतरीन सुकून देने वाला एक गर्व का क्षण होता है कि हमारी जो तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है वो एक बेहतरीन उदाहरण जवानों के सामने पेश कर रही हैं कि देखिए भारत जो हमारी जो सरकार है वो सेना के साथ खड़ी हुई है, चाहे किसी भी परिस्थिति की बात हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपकी समस्याओं में हम हमेशा आपके साथ भागीदार है और अगर आपको किसी तरह की जरूरत भी पड़ती है तो उसमें लगातार सरकार उनके साथ आगे बढ़ रही है। ये एक खास मायने रहता है कि और जब यहाँ खास बात और है गौरव, जब यहाँ वो पहुंची होंगी और जो यहाँ का एयर क्रू होगा और जो कई सारे पर्सनल होंगे उनसे उन्होंने जो बातचीत की होगी उसके बारे में भी उन्होंने जाना होगा कि आखिर किस तरह की समस्याएं रहती है, किस तरह का एक जो क्रिटिकल पॉइंट रहता है जब आप किसी फाइटर जेट में उड़ान करते हैं तो किस तरह की क्रिटिकलिटी रहती है, किस तरह की जो समस्याएं आती हैं, किस तरह से आप इनसे आगे निकलते हैं, ये सबको जाना होगा। ये अपने आप में खासा मायने होगा क्योंकि गौरव इसके लिए ट्रेनिंग जो होती है खासतौर पर फाइटर पायलट की अगर हम बात करें तो एक ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत बेहतरीन किस्म का होता है। इसमें आपको न केवल फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होना होता है बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा फिट होना पड़ता है क्योंकि कई सारे डिसीजंस, कई सारी चीजें आपको एक साथ करनी पड़ती हैं और बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से उनको परफॉर्म करना होता है। तो ये सारी चीजें जब राष्ट्रपति Sukhoi-30 MKI में होंगी तो ये भी समझ सकेंगे कि आखिर हमारे जो पायलट है वो वैश्विक स्तर पर सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, सबसे बेहतर माने जाते हैं। उसको भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके से वो अपने जो काम है उनको अंजाम देते हैं। और एक चीज और जो मैंने खास तौर पर बात कही कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी आप फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करता है, वो बॉडी में किस तरीके से काम करता है उसका भी उनको अनुभव होगा। और फाइटर पायलट हो उनको इनकी ट्रेनिंग लगातार दी जाती है कि आखिर इससे किस तरीके से वो निपटे, किस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए जो अपने उड़ान का जो सुचारू रूप से संचालन है वो किस तरीके से किया जाए, ये अपने आप में रहता है। और बिल्कुल खास तौर पर जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि गौरव एक ऐतिहासिक क्षण, एक गौरवपूर्ण क्षण जब हमारी तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर जो वो है
वो सुखोई 30 MKI में उड़ान भर रही हैं, वो एक ऐतिहासिक क्षण है, न केवल देश के लिए बल्कि सेनाओं के लिए। पूरी दुनिया में एक ये साफ तौर पर ये दिखाता है किस तरीके से जो भारत की लीडरशिप ठीक है है, सुधीर, आप बने रहिए हमारे लीडरशिप साथ हमारी सहयोगी नंदिता डागर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नंदिता, क्या तस्वीरें, क्योंकि अब कुछ ही क्षण का इंतजार है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि राष्ट्रपति बस उड़ान अब भरने वाली हैं, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं आपको? जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस वक्त तेजपुर के एयरफोर्स बेस के टारमैक पर जी मौजूद हूँ गौरव, जो और मैं अपनी आंखों के सीधा सामने देख पा रही हूँ जिस सुखोई 30 MKI का जिक्र आप कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर है, जिसे कहा जाता है हमारी फौजों की सर्वोच्च कमांडर है, वो अगर किसी सुखोई जैसे पोटेंट प्लेटफॉर्म में बैठती हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, न सिर्फ हमारे देशवासियों को बल्कि हमारे दोस्तों को और हमारे दुश्मनों को भी। बिल्कुल नंदिता, और अगर हम बात करें तो जो फोकस रहा है सरकार का कि रक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाना है, तो कहीं ना कहीं इन बारीकियों को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। नजदीकी से जितना जानेंगे उतना ही आने वाले समय के लिए उसको और बेहतर बनाने की प्रणाली को आगे रख पाएंगे। इसको एक और पायलट संचालित करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसके अंदर अभी बैठ गई हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। उनकी ब्रीफिंग पूरी हो चुकी है गौरव, जहां ब्रीफिंग रूम में उनको उनका मेडिकल ये सॉर्ट देने के लिए नहीं है, शायद 2000। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं बस कुछ ही क्षण का इंतजार है और उसके बाद उड़ान भरती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर नजर आएंगी। राष्ट्रपति सुखोई 30 MKI जो विमान है उसमें बैठ चुकी हैं और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुधीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्योंकि फोकस की जब हम बात करते हैं तो रक्षा तंत्र को और उसके बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित किया जा रहा है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा निखर कर आने वाले समय में सामने आएगी, जो रक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करेगी। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए साफ तौर पर ये हम और आप भी महसूस कर पा रहे हैं जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है, मल्टी फ्रंट पे काम कर रही है। न केवल अभी हाल ही की बात करें, अगर कुछ समय पहले तो जो इमरजेंसी जो खरीदारी की बात है उसको लगातार सरकार ने आगे बढ़ाया है। ये सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया मैच की जो हमारी जरूरतें हैं वो कहीं से कम ना पड़ पाए। हमारी जो हमारे सुरक्षा बल है, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, उनके लिए जरूरी साजो सामान है वो वक्त पर मुहैया है। लेकिन इसके साथ ही सरकार लॉन्ग टर्म में ये भी कोशिश कर रही है कि मेक इन इंडिया को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। हमारे जो स्टार्टअप्स है, हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है, वो किस तरीके से सेनाओं की जरूरतें पूरी करें। ये एक बेहतरीन जो पहल सरकार की तरफ से की गई है। एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें लगातार जो देशवासी है उनके लिए बेहतरी के काम हो रहे हैं। तीनों सेनाएं बहुत बेहतरीन तरीके से। All right, so these are the live visuals on your screens right now. President Droupadi Murmu would be flying a sortie on Sukhoi-30 MKI fighter jet. Any moment from now, let's take a word from Abhishek Kapoor also. Abhishek, once again, if you can take us to these live visuals coming in right now. President Droupadi Murmu is all set to fly the sortie. Well, yes, so we're seeing pictures of President Murmu being given a go around at the facilities, and of course then she'll go around in air with the sortie of the Sukhoi-30 MKI, and this is part of a tradition in which the forces, get the Supreme Commander of the Armed Forces to acquaint himself or herself with the latest and of course the preparedness of our respective arms of the armed forces. In the case of IAF, this has typically become a tradition of flying out and having a sortie in one of those frontline fighters. Most of the times it has been Sukhoi. In the case of Defense Minister Rajnath Singh, he has tried other aircraft as well, including, I believe, our LCA Tejas, our own indigenous aircraft. We saw before that President Murmu being given a guard of honor. And before that, of course, she was received by Air Officer Commanding-in-Chief of the Eastern Air Command, Air Marshal Dharkar, SP Dharkar. So I think
these pictures for the next 20 minutes or half an hour are going to have, and this is about messaging as well. This is about preparedness. This is about our forces using this opportunity to present their best foot forward. So when it comes to Navy, for example, Samiksha, the march past that happens, or the sail past that happens by our frontline ships and our naval assets, that also ends up becoming a show of strength occasion also. So similarly, in the case of the Indian Army, the president would be typically taken to a firing facility and shown live fire exercises, and taken to a main battle tank or shown army's exercises. So this is part of a tradition now, with the president integrated with the armed forces as supreme commander, and President Murmu now being taken to the aircraft, and in a while from now we'll see that picture of takeoff and landing in all about 15-20 minutes. Droupadi Murmu, who's all set to fly the sortie. Remember, it's part of tradition which happens every time, and this time it's President Droupadi Murmu who's in Assam on a visit from 6th till today, and she's all set to take off and fly that sortie. तो ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां हैं और जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बस अब से कुछ ही देर में ये विमान उड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें बैठी हुई हैं और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है, क्योंकि आज वो खुद जान पाएंगी, समझ पाएंगी, बारीकियों को नज़दीकी से देख पाएंगी, और इसीलिए ये उड़ान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम औपचारिकताएं जो हैं वो अब पूरी होने को हैं। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, बस अब कुछ क्षण में ही उड़ान भरने के लिए द्रौपदी मुर्मू तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि नंदिता ने साफ तौर पर कहा कि एक लेडी ऑफिसर है जो बाकायदा जो मैं लॉ के बारे में बहुत ज्यादा फाइनल ब्रीफिंग जो दी जाती है वो दी गई है कि आखिर जो किस तरीके की जानकारी, वो सारी जानकारी उनको दी गई। उसके बाद से अब वो जहाज जो है, जो फाइटर जेट है, वो अब Let's take a word from Wing Commander Praful Bakshi also joining us. Wing Commander, if I can take a word from you. President Droupadi Murmu, who's all set to fly a sortie on Sukhoi-30 MKI fighter aircraft. Absolutely right. President is going to fly. Rashtrapati Droupadi Murmu is going to take a sortie in the Sukhoi-30. Well, this is a red letter day for Indian Air Force, but it has been repeated a number of times. Our presidents have flown, lady presidents have flown, defense minister has flown, Nirmala Sitaram ji had flown these sorties. What I would like to tell you is this shows that the Supreme Commander of Indian Armed Forces takes special interest in their armed forces, and this not only is a very happy day for the armed forces, it raises the morale, it raises the happiness index of the armed forces, that so much of trust is being put on them. And as you can watch yourself, how the president is being prepared, and she is being strapped in the fighter rear cockpit, where the air officer commanding, the senior officer pilot, the lady pilots are all taking interest. They are giving her the last minute instructions, tightening her straps, connecting her anti-G device, RT connection, and all other aspects which she must know. This is not just a passenger sortie. She will be briefed totally that in case of emergency, what will happen. She has been told. And you can see the expression of the president, how smartly she has taken to everything so happily. And of course, they have saluted. This is a salute which everybody gives. That's supposed to be the last salute before the pilot goes on a sortie. You will see the people who come to see them off all salute them, and the airmen, when they're on the wingtips, they will, when they remove the chalk, they will also give a salute to the aircraft, to the president who's going. So what I would like to tell you, this sortie is a big message, not only to the Indian citizens, that Indian Air Force is ready and totally
operational, as you can see, but message will go across the waters to the enemies. Those who are also flying Sukhoi-30s also there. They will now see for themselves how much of faith is imposed on the armed forces of India and what is the fighting standard of armed forces of India. It's totally visible on the screen. Yes, yes. Wing Commander, requesting you to stay with us. So these are the visuals you see on your screens right now. President Droupadi Murmu is all set to take off from the Tezpur IF station. Wing Commander, for our viewers also who are watching this broadcast, if you can talk to us more about the checks and balances that are in place once before the IF takes off, because we understand a briefing is also given to the President, a proper briefing, and also we see those visuals of the President wearing the IF gear before it takes off. President has been totally briefed. In the briefing room, she was briefed by the pilot and the senior pilot, or the supervising pilot, that what the sortie is all about. And before that, she must have gone for a medical test, where until she is medically fit, she will not sit in the cockpit. And of course, this sortie will not be a sortie which will require the extreme limits of the body's endurance. No, this will be a normal introductory sortie for President. But whatever the case may be, her physical fitness and medical fitness is totally mandatory, and that is what has been done. She has been briefed on the emergency procedures, and as you saw how she was briefed on last-minute briefing while strapping up, and everything has been complete. So President knows what she is doing and what is the sortie about, what is this aircraft about, and you can watch very clearly, as I told you, how the airmen are now seeing the aircraft off. The engine is now being started up. Everybody is ready, and the cockpit will be lowered, the canopy will be lowered, and the aircraft will taxi out. Yes. But a lot of other systems are taking place at the moment. Pilot is doing its last-minute checks, everything. ATC will control, will give a clearance, and then only the aircraft will taxi out on the taxi route. Probably it may be escorted also. And from the vital action point, pilot will do his vital actions to make sure last-minute checks are done before lining up for takeoff. And here is the senior engineering officer also having a look for everything last-minute check if there is any doubt. The battery has been connected, so the aircraft going to be started up. And now, as you said, it has started up. It has been disconnected, everything, and now the further procedures are taking place. Some pins have to be removed as the aircraft. This is a standard operating procedures which the airmen follow, which keep getting updated from time to time. And as we see, the air brakes have been checked of the aircraft. Pilot is doing its normal check. It will check the control surfaces. All the things, air brakes, flaps, everything will be checked for serviceability. As you see, the canards have been checked, and now the pilot is looking from both the sides for clearance. So all these things are a part of professionalism. You can see the rudders being kept now for total free and full movement, and that is what is SOPs. The ailerons are checked left and right, so that everything is totally serviceable. Once again, the radar you see now, rudder moving faster, and very soon you'll see the canopy coming down, and that will be the sign that the aircraft is ready for takeoff. Once again, the canard is rechecked, and if there is anything which is noticed from the ground by the senior engineering officer or anybody, the sortie will be held up till such time the doubts are clear. But I don't think so that will happen. As you can see, the serviceability standard is very high. I'm totally sure of it. I know it. So, and Tezpur is an operational base, you know very well. It is housing the Sukhoi-30s and all top-of-the-shelf fighter aircraft of Indian Air Force right from 1950s onwards. In fact, it's a wartime wartime airfield, and the canopy has come down fully. As it comes down, the pressurization will be on, and total 100% oxygen will start flowing into the mask of the President. Yes. So now we are waiting. The chocks have been removed, and you can see the brakes have been checked, and now the pilot will open throttle
to move forward, and you will see the aircraft now will be moving forward for the rest of the sortie. Actually, the sortie starts now. When the aircraft leaves, that is how the sortie is recorded, from chocks to chocks. And now the sortie, it will be now, they are in full-fledged sortie right from the time they taxi off and leave the pen. This is the blast pen where they are kept. And once again, you have seen the pilot has moved the aircraft forward. Now it's moved out and it turned left very smoothly. And the nose wheel steering system works very well in the aircraft, and it's now carrying on along the route, the taxi route, to the vital action point. The point to note out here is that this readiness of Indian Air Force is very, very high. Why? Because the standard of the engineering, airmen, the officers, and technical, everything is very high, and that is what has been noticed by all the countries, including in COP India exercise and other exercises. This has been noticed, and everybody has been very, very surprised as to how India maintains such a high standard and at a high level of readiness. And total security is, of course, I don't have to talk about it because you can understand how the whole area must have been secured. The local radar will be on, the aircraft will be fully on radar as the aircraft takes off. And the pilot will monitor, the ops normal call will be given. There is no doubt about it. I don't want to exaggerate. Everybody must be now in a great excitement because President of India is flying. So I don't want to understate the whole thing, but this is how it is. The aircraft has turned left further, it has cleared the hangar, and now it is proceeding now towards the vital action point. And everybody is ready out there. Of course, the CNC Eastern Air Command must be there, also watching everything very carefully, very intently. And this will make a very, very happy moment and a very exciting moment for the Indian Air Force, our red letter A, as I have already told you. The aircraft will, of course, follow. Must be followed by the fire tenders, etc. They are all in the position as a normal day-to-day sortie is there. Let me tell you one thing. Every sortie there is nothing which does not take place every day. This is a common phenomena, and that is what is happening. One must not think that only it is happening at today only. This is SOP. The President is observing the total standard operating procedures, what it is. And let me tell you one thing. President understands everything. Let us not think that the President won't understand what is happening. And that is the beauty of the whole thing. And that is what is required of all the professionals. They have to produce the results as the standard operating procedures demand. And this is the main dispersal which the Sukhoi is clearing off now. And let us see. Yes, of course, the pilot is very careful. He is maintaining his normal taxiing speed at the moment till such time he comes out in the open, where he can probably taxi out a little faster and join the runway. That's right. Wing Commander, if I could also ask you to speak to us over these visuals as you were telling us about the Sukhoi-30 and how this is, of course, going to be the second president, the second female head of state, in fact, to fly a warplane after the former President Pratibha Patil. And now, of course, we are seeing the Sukhoi-30 about to take off for that sortie as well. And if you could, Wing Commander Praful Bakshi, also speak to us over these visuals and explain to our viewers the nitty-gritties of what really goes on in the preparation and what exactly is expected once she actually does take off. See, now the last-minute inspection is going before the aircraft goes on the runway.
And this aspect, from there are SOPs to every aircraft is a different SOP. Every the checkup is different. Some aircraft are checked from one aspect, some aircraft are checked from the other aspect. Whatever is required, every aircraft requirement is different. But the last minute check has to be done, especially from the point of view of any oil leaks and brakes, etc., falling on it, any signs of smoke, all those things are seen, and all of the necessary pins which have to be cleared for smooth flying is required. And this is going to be a non-operational sortie, so there are no armaments involved in this this sortie. It will be a clean, probably like in our parlance, is a general handling sortie, which will be carried out, and last-minute brake check the pilot has carried out, so that to just check that the brakes are total functional, and any doubt which the airman has, he's seen the creeps, etc., on the tire. If they are developing any, nothing is there. I'm quite certain, and he is quite happy as you watch. And the senior supervisor is standing on the left, just watching to let the aircraft move so that he can signal it to join the runway. And the airman is checking the tires and the brakes, has now given the clearance, and he's come forward. And now together they should move the aircraft forward, give a signal. Pilot will take the signal and join up. Let us see how quickly the takeoff takes place. But there will be no hurry. There will be no shortcuts. That is for sure. That is only, that's the sign, that is what the Indian Air Force is all about. There is no shortcut. So everything has to be done very quickly, all right, but without taking any shortcut and without skipping anything. The pilot has moved forward, and he will now turn left, that he is doing, to line up properly along the center line, and he's moved out. And from the takeoff point, when it reaches the takeoff point, the pilot will again put the aircraft on the takeoff point, then he'll stop the aircraft, and then after he'll see how it is functioning. So at the moment, it is proceeding towards the takeoff point, and it will do some checks which are required at that time, last minute check. It will carry out and make sure that all the necessary selections have taken place, where the flaps required is, what are the flap requirement is there, what are the temperatures, pressures, everything is normal, all the oxygen flow is normal. He'll ask the President, are you feeling comfortable? That is, I'm pretty sure will be asked, and the President will give it's okay, because it's very necessary, because it's the first sortie for the President flying in this aircraft, or in any aircraft, I think in any jet aircraft, fighter aircraft, for that, it may be. So one has to be careful. There is no doubt about it. As I told you, there will be no shortcuts. So there will be no shortcuts. This is far last minute. The final checks which the pilot does, he'll probably open full throttle on the brakes to check up how the performance of the brakes and how the performance of the acceleration is there before it releases the brakes for a takeoff. At the moment, ATC is being contacted. ATC will give the clearance for takeoff. All the total takeoff path has to be totally clear. There is no aircraft should be flying. And there are SOPs when the head of the state is flying or VIP is flying, then the speed, what is the SOP? The pilot has to release the brake. The aircraft is now out the runway, along the runway, and it has now raised its nose and carried out airborne, climbing very smoothly. And as you will watch, the pilot will now put in a turn to turn towards the local flying area, whichever is allotted to the pilot. I hope the camera catches the aircraft so that I can tell you, yes, it's still straight and level, very good. It is going to gain its complete height. Probably to go climb up to 3,000 feet or 4,000 feet as the briefing has been done. There is no fixed thing that it will only fly till that height. From the operational point of view, whatever is required is already done. But still the aircraft is still straight and level, as you can see. And thereafter, I think it is leveled out now and it is still proceeding straight. Let us see if our camera catches on. I doubt.
So this was the very successful takeoff of the President of India in the aircraft. And the entire airfield is totally alert, full of, enthusiasm. And as we will watch, the President will probably be shown some light turns with bank, a little steep turn will be shown. And well, it's still flying. The camera is caught on. I'm very happy. And this is a portion of the takeoff once again for us, which we had missed. Yes. And with the carrying of the height. But the question here is that as the aircraft gains height, there will be pressure on the body. There's no doubt about it. But they will be very light at the moment. Till such time, the pilot undertakes the high G maneuver. That is the time when the G increases. But I doubt they will take. And the aircraft's height, probably we do not know till what height they'll climb, but I personally feel not more than 25,000 feet. It will not climb more than that. So this is very essential to know, because at the moment they don't want to put aircraft onto the President onto undue pressure. I personally feel that should be avoided. 25,000 feet will be very good for the President, and a little bit of maneuverability of the aircraft will be shown, but that not more, not high Gs, etc. If I had authority, I would not allow it at that moment for the President to be put under high G. But whatever the case may be, it all depends on her enthusiasm also. And I personally feel she's so enthusiastic that she would want something more. But I know very well the pilot's briefing is absolutely perfect, and he will not violate his briefing and not get carried away. So he will carry out whatever is decided for the President, and that's what he did. So once again, another view of the same takeoff we are watching. The pilot must have leveled off by now, and he must be in their local flying area and reported. And when in the local flying area, the pilot will keep giving off normal call every 5 to 7 minutes. Why? Check up the pressures, where temperatures are all okay, aircraft is maneuvering, the other pilot, the passenger who's in the aircraft is okay, health is okay, and that all monitoring system is running well, and that report pilot will continue giving to the flight control. That is called ops normal call, which will be continuously given as the required period is there. And the afterburner, when it comes, the President will feel the acceleration of thrust. Afterburner, when they are switched off, you can make out. When the afterburner is there on the takeoff, you can make out. And especially during maneuverability. And here she is. Once again, the President is on the scenes which were taken place earlier when she was proceeding towards the aircraft is there. So we have now seen the beginning, and the remaining sorties are being shown together. That's right. Wing Commander Praful Bakshi, you're taking us through the smaller point-by-point process of what really goes on when the President is in fact on board of the Sukhoi aircraft as well. We appreciate you to actually double down and actually give us some perspective on how really these procedures are followed. But if I could come to you over a broader point of this particular optics, these particular pictures that we're looking at right now, where we see the President Droupadi Murmu on board of the Sukhoi, and of course a sortie being made. Talking about the optics, if you could speak to us about how it really speak to us about the preparedness of the Indian Armed Forces and what it really shows to the rest of the world when we have our President on board of our aircrafts carrying out a sortie as well, Wing Commander. No, there is no doubt about it that the President, when the head of the state comes, there is no doubt about it. Extra precautions have to be taken, which is as per the protocols. From the flight safety point of view, of course, nothing will be changed. It is not that a normal sortie that the flight safety is less and the other sortie the flight safety is more. No, that is constant. But there will be other, from the point of view of security,
protocol, like no other aircraft is flying. All the radars on the monitoring the borders will be on. That point of security will be there. There will be total alert in the air. In fact, that the aircraft at the total sky is safe. I don't want to draw in any extra fears at all, but the question is, if I am in the decision-making team, I will make sure that even the aircraft are there, armed aircraft are there around the sky, also to make sure that no untoward mischief is carried out by any other outside powers when our president is taking place, because president's flight is taking place, because it is President of India. So the protocol demands higher security. That aspect is totally different. So, but the smoothness of the flight, as watching the takeoff, how it took off and it will continue, that will be appreciated very much, because it's a modern aircraft, and the president, as her enthusiasm is of course very infectious. Everybody has been infused by her enthusiasm, and it will go down the line, and that is how the rest of the world will see that what is the standard of Indian Air Force. Standard of Indian Air Force. Of course, they are not showing us the rest of the security aspects which have taken place, which I can only describe, but we cannot show. But that is already there. How many radars are on? The missiles may be on. In fact, any movement which is there, it is always so. So is the case. But that is understood. It is there, so it is there. Right. Wing Commander Praful Bakshi, I want to thank you for joining us here on Republic TV and breaking down the procedure that is followed as we see our president, the President of India, on board of the Sukhoi aircraft carrying out a sortie. And we can expect those images to really come to light when the entire sortie is carried out by the president and the exercise, in fact, culminates. And we have seen how the president has been on the visit to the northeast, and now, of course, today she is on board of the Sukhoi aircraft. After she flew that sortie Sukhoi fighter aircraft, the visuals are on your screens right now of that successful landing of President Droupadi Murmu. So the visuals there coming in of that aircraft in which President Droupadi Murmu, she flew the sortie on Sukhoi-30 MKI fighter aircraft from the Tezpur Air Force Station. So visual spectacle there as President Droupadi Murmu's maiden Sukhoi sortie is completed. The visuals there live on your screens from the Tezpur IAF station in Assam. ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सुखोई विमान है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति सवार हैं, इसकी खासियत क्या है, इसके लिए आपको जानने की ज़रूरत है। सुखोई को, जैसा कि हमने कहा था कि ये जो सुखोई-30 MKI विमान है, इसे 4th जनरेशन का एक लड़ाकू विमान, फाइटर जेट के तौर पर इसे माना जाता है। और भारत ने इसकी कुल खरीद 272 विमानों की खरीद की थी। और ये विमान जो है वो लियोल का L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से लैस है। और इस इंजन से लैस होने का मतलब ये होता है कि ये 123 किलो न्यूटन की पावर देता है इस विमान को, और जिसकी वजह से इसकी जो अधिकतम गति है वो 2000 से भी ऊपर 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान उड़ान भरता है। हमारे सहयोगी जो कि रक्षक प्रोग्राम भी करते हैं, आप देखते होंगे डीडी न्यूज़ पे, हमारे डिफेंस के कॉरेस्पॉन्डेंट सुधीर यादव इस वक्त हमारे साथ अब से कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के जरिए So visuals are coming in right now of President Droupadi Murmu's successful sortie landing on Sukhoi-30 MKI fighter aircraft
at the Tezpur Air Force Station in Assam. So the visuals there on your screens coming to you live from the Tezpur Air Force Station as President Droupadi Murmu took her maiden fighter jet flight today. Remember, she was seen wearing an anti-gravity suit before stepping into Sukhoi-30 MKI fighter aircraft at the Tezpur Air Force Station. She's remembered on a visit to Assam, Supreme Commander of the three services. Last time we saw the former female president flying that frontline fighter aircraft was President Pratibha Patil way back in 2009. President Droupadi Murmu there flying Sukhoi-30 MKI fighter jet as we speak. The visuals are live on your screens from the Tezpur Air Force Station. The Sukhoi-30 MKI, which remember is a twin-seater multi-role fighter jet that's been developed by Russia's Sukhoi and built under the license by India's aerospace giant Hindustan Aeronautics Limited or DHL. So the visuals there on your screens, President Droupadi Murmu's maiden Sukhoi sortie. The visuals live on your screens from Tezpur IF station. In fact, President Droupadi Murmu was also seen wearing an anti-gravity suit before she stepped into that Sukhoi-30 MKI fighter aircraft at the Tezpur Air Force Station in Assam. Remember, Sukhoi-30 MKI is a twin-seater multi-role fighter jet that's been developed by Russia's Sukhoi and built under license by India's aerospace giant, DHL. The visuals there of President Droupadi Murmu, who's just landed, and that's successful landing of Sukhoi sortie. President Droupadi Murmu there, who took her maiden fighter jet flight at
10:30 a.m. और जैसा कि सुधीर बता भी रहे थे कि देश की बेटियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि देश की बेटी, देश की महिला, प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू और भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी आप देखिए, इनमें एक महिला भी हैं। सुधीर, आप बता भी रहे थे कि देश की महिलाओं के लिए अगर बात की जाए, एक रोमांच और एक जुनून भी उनमें पैदा करेगा कि हम भी जरूर भारतीय वायुसेना में जाएं और देश की सेवा करें। सुधीर, ये तस्वीरें जी बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ तौर पर असीम देखिए बिल्कुल रोमांच भर देती है कि जो तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है, उनको एक यंग जो पायलट है वो खुद एक जो महिला एयर क्रू है वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनकी सारी जो तैयारियां हैं। तो ये दोनों एक साझा रूप से बिल्कुल ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से महिला शक्ति को लेकर जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है। तीनों सर्विसेज जो है उनमें उनकी एंट्रीज को, उनके प्रमोशंस को लेकर आगे बढ़ा गया है। उनके इंडक्शन में खासतौर पर बात करें, जिस तरीके से लंबे समय में ये भी बात हो रही थी कि कॉम्बैट में महिलाओं को, विमेन्स को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सरकार ने उसके रास्ते बीच खोले हैं। और अब जो फाइटर पायलट्स है, विमेन है, उनका जो पहला बैच है वो वायुसेना में पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण, और जिस तरीके से अब चूंकि सुप्रीम कमांडर ने Sukhoi-30 MKI में उड़ान भरी, तो ये जाहिर तौर पर जो हमारी देश की जो युवा बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनमें जरूर उत्साह भरेगा। उनको साफ तौर पर ये एक मोराल देगा, एक उसमें उत्साह भरेगा कि उनको सेनाओं में जाना है, उनको आखिर वो जगह जाकर देखती है जहां जो हमारे तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर है उन्होंने उस विमान में उड़ान भरी। आखिर ये क्या होता है, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरह से ये रोमांचित करता है, ये लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। तो ये जाहिर तौर पर हमारे जो युवा है उनको भी आकर्षित करेगा सेनाओं की तरफ जाने के लिए। ये अपने आप एक बेहतरीन कदम। और इसके अलावा जिस तरीके की हम बात कर रहे थे कि सेना की तैयारियों को लेकर सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो अपने आप में खास है। और हाथ हिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए, उनका अनुभव बहुत ही शानदार रहा होगा। Sukhoi-30 MKI विमान में, लड़ाकू विमान में किसी भी व्यक्ति के लिए, हालांकि ये सबके लिए संभव नहीं है, बहुत ही खास व्यक्ति राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको ये मौका मिला आज। और वहाँ पे हम देख सकते हैं तमाम जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो उनको स्कॉट करते हुए, और वो अब गाड़ी में बैठेंगी। तो ये आज का दिन, आज का ये लम्हा, आज का ये क्षण बहुत ही ऐतिहासिक है। एक सुनहरे अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तीनों ही सेनाओं के कमांडर, वो आज एक देश की जो बेहतरीन लड़ाकू विमान है उसमें वो बैठी और उनकी सवारी की। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब ये विमान लैंड किया था। और जैसा कि सुधीर बता भी रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया ये विमान Sukhoi-30 MKI, और बहुत कुछ इसकी खासियत है। हमारी जो रक्षा पंक्ति हैं उनके ये कुछ, जो अगर मैं कहूँ, ये वैसे जो लोग हैं हमारे सेना के लोग। और उसके बाद ये तस्वीरें जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें तेजपुर एयर फोर्स स्टेशन से। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लम्हा, ये क्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी तुरंत ही वो इस विमान से उतरी हैं। वो विशेष हेलमेट और वो ड्रेस आप देख सकते हैं वो पहनी हुई, और इस तरह से वो धीरे धीरे उनको वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो उनको स्कॉट करते हुए वो अब गाड़ी में बैठने वाली हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और साथ में उनके साथ वायुसेना के तमाम आला अधिकारी। सुधीर, आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये जो Sukhoi-30 MKI वो चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, और 2000 से भी ऊपर जो किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है उससे ये विमान उड़ान भरता है। तो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Sukhoi-30 MKI, जो हमारा लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, उसमें उन्होंने उड़ान भरी है। उम्मीद हम करें कि जब भी वो अपने इस अनुभव को साझा करेंगी बहुत ही रोमांचक होंगी, और लोग भी जब सुनेंगे उनकी बातों को। You see the visuals there of President Droupadi Murmu as she took that ride at sortie on the Sukhoi-30 MKI fighter aircraft.
Remember, with this event, President Droupadi Murmu is now the second female Indian president to take a flight in a fighter jet. The first female leader to do so was, of course, former President Pratibha Patil way back in 2009 when she took her flight in a Sukhoi fighter jet from the Pune Air Force Base. So after 2009, it's the second female president, President Droupadi Murmu, who flew a sortie in a Sukhoi-30 MKI fighter jet at the Tezpur Air Force Station in Assam this morning. The president, remember, is of course the supreme commander of the three services and is in Assam. With this event, President Droupadi Murmu has of course now become the second female Indian president to take a flight in a fighter jet. The first female leader to do so was Pratibha Patil way back in 2009. And there you see the visuals also of President Droupadi Murmu, who just flew a sortie in Sukhoi-30 MKI fighter jet. All checks and balances were done, and she was in fact briefed as well by the commanders, by the pilot, and after which she took that ride, a sortie in Sukhoi-30 MKI fighter jet at the Tezpur Air Force Station in Assam.